Hello everybody, this is going to be a surprise reading for Sumbul Fahmaan fans. So let's do this Sumbul's thoughts and feelings for for Fahmaan and Fahmaan's thoughts and feelings for Sumbul karenge hum. We have not done this reading for a long time, and especially because I think they are going through some very delicate phase in their relationship. So let's try to explore this. Besides, if you have seen Sumbul ka weekly guidance, we had taken from that card, that deck, the overall theme for her week, which was mending. अब mending का जो card है was also something that came out for my weekly guidances that I do. तो सुम्बुल का जो वीकली गाइडेंस है, पर्सनल वीकली गाइडेंस थीम है, मेंडिंग है और कलेक्टिव का भी मेंडिंग है. सो इन टोटलिटी lot of us must be going through this this feeling some kind of really loss over something, feeling that we are not taken care of, we are feeling unsupported in some way. ठीक है, तो वो चीज with that introduction, let's see what is Sumbul thinking about Fahmaan at this point in time. We thank you. Okay, Five of Sword in reverse. She is very stressed out about Fahmaan, looks like. All right, so Sumbul का thoughts Fahmaan के बारे में काफ़ी, if you see, it has changed 360 degree. The wheel of fortune is like upside down. तो आप ये भी कह सकते हो कि जो सुम्बुल फहमान के बारे में जिस तरह से सोचती थी, अब वो काफ़ी 360 डिग्री बदल चुका है. लाइक इट हैज़ गॉन थ्रू अ मेजर चेंज इन हर लाइफ. ओके, एंड द वे दीज थ्री कार्ड्स हैव कम इज ऑल्सो शोइंग द सेम थिंग. काफ़ी स्ट्रेस्ड आउट है वो. सुम्बुल के थॉट्स फहमान के बारे में हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो फाइव ऑफ सोड है. फाइव ऑफ सोड का मतलब है कि लाइक मोर लाइक ओके, सो इट्स लाइक शी थिंक्स कि फहमान ने कुछ ऐसा किया है जो कि उसको नहीं करना चाहिए था. एंड इम्पॉर्टेंटली Fahmaan has hit below the belt, and he has probably played dirty and to win something. So these are Sumbul's thought about Fahmaan, जो कि of course अभी थोड़ा उससे निकलने लगी है, क्योंकि I think maybe some time back या फिर last week या 10 days पहले तक she was in the middle or the gooey part of this thought. ऐसे होगा जहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा ये फील कर रही होगी कि दिस ही हैज़ हिट बिलो द बेल्ट, ही हैज़ बीन मीन, ही हैज़ डन समथिंग टू विन समथिंग, मे बी यूज्ड हर. इस तरह की एनर्जी है जो कि अभी तो थोड़ा बाहर आ गई है उससे, क्योंकि ये पास्ट की एनर्जी है. बट ऑफकोर्स उसके थॉट्स फहमान के बारे में टोटल 360 डिग्री चेंज हो गए हैं. बिसाइड्स व्हाट शी थिंक्स अबाउट फहमान. मून का फेज इन रिवर्स. She thinks moon in phase in reverse. Okay, all right. She thinks that she knows, she has seen the true color of Fahmaan. You understand that? Something like that. She could see वो फहमान के ट्रू कलर्स को जान गई है, ऐसा लग रहा है यहाँ पे. ओके, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि समवेयर ही हैज बिट्रेड हर, उसको उसने अकेला छोड़ दिया है, समथिंग लाइक दैट. ओके, दीज आर सुम्बुल्स थॉट्स फॉर फहमान. ओके, यहाँ पे अगर देखो तो ये जो
this is the river, right? And she is like kind of drowning here. Interestingly enough, जब मैंने बहुत 2-3-4 महीने पहले जब मैंने रीडिंग की थी, सुम्बुल की एक डिटेल रीडिंग थी, पर्सनालिटी वाली रीडिंग थी शायद, जहाँ पे ये मून का कार्ड अपोजिट यहाँ पे आया था विथ अनदर डेक, वेयर शी वॉज एग्जैक्टली मून का कार्ड था, बट इट वॉज अनदर डेक वेयर शी इज काइंड ऑफ फॉलिंग इन टू दी सी. यू नो, शी इज ड्राउनिंग, नॉट फॉलिंग, ड्राउनिंग डीप इन टू दी सी. जैसे कि वो गिरते जा रही है. और अभी यही चीज आ रहा है ना कि एग्जैक्टली शी इज ड्राउनिंग, और उसको लग रहा है कि उसने उसको बिट्रे किया है, यूज किया है उसको. यू नो, ही हैज हिट बिलो द बेल्ट, मीन है, ये सारी चीजें, ईगो ड्रिवन काम किया, ये सारी चीजें सोच रही है, उससे बाहर भी निकल गई है. और अब उसका है ना कि उसके ट्रू कलर्स को उसने देख लिया है, और फहमान ने उसको अकेला छोड़ दिया है डूबने के लिए, समथिंग लाइक दैट. एंड हाउ विल शी रीच द अदर साइड? But she will manage without him because she is kind of trying and all. काफी दुख दिया है फहमान ने उसको, ऐसा सोचती है वो. काफी चीजें बदल गई हैं, ऐसा सोचती है वो. ये सब तो हमें लग रहा है फहमान ने उसे बहुत स्ट्रेस दिया है, वो ये भी सोचती है. ओके, फहमान हैज कॉज्ड हर लॉट ऑफ स्ट्रेस. एंड डू यू रिमेंबर जब उसकी 1 वीक या 2 वीक पहले जो हमने रीडिंग की थी, जहां पे ये जो स्ट्रेस वाला कार्ड था, आई हैड डन अ डिटेल्ड वीडियो जहां पे ये स्ट्रेस वाला कार्ड सबकॉन्शियस लेवल में उल्टा आया था, वेयर शी हैड फाइनली टेकन अ डिसीजन. 2 ऑफ सोर्ड का कार्ड आता था यहाँ पे, एक्चुअली यहाँ पे 2 ऑफ सोर्ड का कार्ड था, क्वीन ऑफ सोर्ड यहाँ पे थी, नाइट ऑफ सोर्ड यहाँ पे था, एंड आफ्टर अ लॉन्ग टाइम 4 ऑफ सोर्ड था यहाँ पे शायद, समथिंग लाइक दैट. तो आफ्टर अ लॉन्ग, और 4 ऑफ सोर्ड शायद बैक ऑफ द डेक में था. तो 4 ऑफ सोर्ड काफी ज्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशन बनी हुई थी, जिसके कारण वो काफी स्ट्रेस्ड आउट भी रहती थी. लेकिन फाइनली, बहुत डिफिकल्ट डिसीजन था, लेकिन फाइनली लाइक अ क्वीन ऑफ सोर्ड शी इज वेरी क्लियर इन हर हेड, और उसने एक डिसीजन लिया है. तो ये जो 9 ऑफ सोर्ड है ना, वही चीज है, फहमान से रिलेटेड ही सोर्ड था वो, समझ में आया ना. सो हाउ अगेन द रीडिंग इज flowing and folding into one another, and people tell that I am biased and my readings are wrong. Anyways, so this is how this card is linking back to the reading that we did for Fahmaan and Sumbul, especially 10 days या 2 weeks back, I don't really remember, but ये वाला स्ट्रेस चीज है. तो अभी जब वो फहमान के बारे में सोच रही है, तो वो यही सोच रही है कि ये सब सारा काम किया उसने, तो डेफिनेटली उसको काफी स्ट्रेस हुआ, तो उसने मुझे बहुत स्ट्रेस दिया है, प्लस उसका ट्रू कलर भी उसको पता चला है, एंड ही हैज लेफ्ट मी ड्राउनिंग हियर, बट आई विल रीच माई डेस्टिनेशन, एंड शी इज वेरी सैड अबाउट ऑल्सो दैट, उसने बहुत मुझे दुख दिया है. तो ये सारी चीजें सुम्बुल अभी सोच रही है फहमान के लिए. ओके, सो लेट्स पुल वन मोर एक्स्ट्रा कार्ड फ्रॉम हियर दिस डेक एंड सी व्हाट वी कैन गेट. ऑल राइट, प्रेयर्स, more like, you know, she has lost hope on Fahmaan. Moon phase, 5 of sword, 9 of sword, what is that? All heavy energies. Give yourself over completely to prayer. When you pray from your heart, you will be heard throughout the universe, and answers and support will arrive. तो अब उसको समझ में ही नहीं आ रहा है कि चीजें तो अब बिल्कुल, I mean, फहमान से तो टोटली डिसअपॉइंटेड है, एंड इनफैक्ट मोर देन डिसअपॉइंटेड है वो, एंड शी हैज नो होप फ्रॉम फहमान, एंड शी इज लाइक कि ये तो सिचुएशन कभी ठीक ही नहीं हो सकता. एक्सक्यूज मी. तो उसको लगता नहीं है कि ये सिचुएशन अब ह्यूमन बीइंग्स या वो दोनों एक दूसरे ठीक कर सकते हैं. अब तो यहाँ पे कुछ डिवाइन इंटरवेंशन होगा, तभी उनका रिलेशनशिप ठीक हो सकता है, बिकॉज अब तो हमारे बस में नहीं है इस रिलेशनशिप को ठीक करना, वो ऐसा सोचती है. ठीक है, ऑल राइट, दिस इज व्हाट शी थिंक्स. We will pull one card from here to see if we can get some additional guidance on this. Sumbul's thoughts for Fahmaan, dear angels. We thank you so much for this guidance. Worthiness issue. Do you see this worthiness issue जो यहाँ पे पढ़ा मैंने? Exactly the same thing, right? She is also sitting by the river, and यहाँ पे she is drowning in the river, which I picked actually.
तो इट्स मोर लाइक नो यू डिजर्व टू रिसीव गुड इन ऑलवेज. तो उसको लगता है कि फहमान ने उसके साथ अच्छा नहीं किया, धोखा किया, बिट्रे किया, he hit below the belt, he played some ego game, some these things. And इसके कारण वो डेफिनेटली उसको ये भी लगता है कि उसने उसको छोड़ दिया, सपोर्ट नहीं किया. She is very disappointed, sad, importantly, more than disappointed, she is very sad, hurting, and yeah, moon phase and worthiness issue. यहाँ पे भी moon आ गया है देखो. So this card is being confirmed by this card. And people say that I do biased reading and I do wrong readings, when every week I'm giving a spot on readings. So that is called what? Ego. Just because I'm not telling what you want me to tell, I don't become biased, or for that matter, any tarot reader becomes biased. We tarot readers have to read what our spirit guides are telling, and there is no other way to it. We are not here to pamper anybody's ego. We are here to read the cards. And each to his own. तो यहाँ पे ये जो मून है, यहाँ पे ये मून, दोनों एक दूसरे को स्ट्रेंथन कर रहे हैं, क्लियर कर रहे हैं, ये सारी चीजें हो रही हैं, ठीक है ना. तो दिस इज व्हाट Sumbuls thoughts for Fahmaan. And interestingly enough, not really interestingly enough, but yeah, ये जो सुम्बुल का ये हैवी एनर्जी जो सुम्बुल फेस फील कर रही है फहमान के लिए, इज टाइंग इन अगेन वेरी वेल विद द मेंडिंग theme that she has got for this week. Mending relationships. Do you want me to read the message of that card? Give me a moment. All right, guys. So this was the mending card that that Sumbul got as a theme for this week, and this is also the card for the collective. So a lot of people might be feeling this hurt, and I will read this message for you. वैसे तो मैंने community tab में इसको post किया था, but let me quickly read this for you. So with all this heavy energy, and you can say also कि क्योंकि mending की heavy energy है, because she is feeling all these emotions for Fahmaan, तो कहीं ना कहीं फहमान उसके जहन पे ज़्यादा हावी है इस वीक, आप ये भी बोल सकते हैं, क्योंकि mending ये सारी heavy energy से ही आ रही है, where she wants to mend something in her life, feeling very alone, unsupported. All right. Okay, give me a second and I will quickly pull that out. 52. Okay, here we have forgiveness. Yes, exactly, forgiveness. अब समझ में आ रहा है आपको. यहाँ पे I explained you, right, how she is feeling about it, that he betrayed her, hit below the belt, ego game खेला है उसने, selfish है and all that, betrayed her and caused her a lot of stress. So she is in the theme of mending, forgiveness, making amends, forgiveness, healing after arguments. So all this heavy energy and then forgiving. Each time we hurt and allow the hurt to pass through us without understanding and integration, we accumulate an unwanted burden. Exactly, we are accumulating the unwanted burden over here. This keeps us changed This keeps us changed. Why am I finding it difficult to read? This keeps us chained to the very things we need to heal. The pain, the memories, the echoes. So बहुत ज़्यादा memories फहमान का. Memories of resentment and arguments that we rehearse over and over in our head. All the things she feels Fahmaan did to her, she's rehearsing in her head, and she's getting stressed and going through the cycle of pain and all that. And therefore the mending card. So all this little energies, all these energy, details of the energy culminating to this overall theme for her this week. Now is the time for mending rifts, healing wounds, moon card, and letting go of the old hurts in order to reclaim your power. Now is the time to forgive, to release, to make peace, and to make amends to others. Set yourself free. Beautiful message, going totally with her things.
एंड जैसा उसका इस वीक का गाइडेंस है, शी इज फीलिंग डाउन, बट हियर राइट टूवर्ड्स द end of the week she is springing back to her emperor energy, taking total control over her down phase. So that was the guidance coming for Sumbul, guys. Do let me know your thoughts about it. Please like, share and subscribe if you like the guidance, and I will see you again. Take care and bye for now.